begin the inaugural session of the Symposium, Indianness of Indian Literature, Sahitya ki Bharatiyata, that is being organized on the occasion of the National Unity Day, Rashtriya Ekata Divas. At the outset, I request Dr. K. Srinivasarao, Secretary of Sahitya Akademi, to please welcome Professor Kapil Kapoor, who is going to inaugurate this symposium. Thank you, sir. Unfortunately, Sri Madhav Kaushik and Professor Pramod Sharma, President and Vice President of Sahitya Akademi respectively, could not make it today due to their health issues. I request Dr. K. Srinivasarao to please welcome the participants as well as the audience with his address. Thank you, Krishna. Respected Professor Kapil Kapoor, eminent scholar and linguist, Professor Udit Narayan Singh ji, Professor Rana Nair, Dr. Varsha Das ji, Dr. Pankesh Jha ji, and Dr. Badir Narayan ji, I think is going to join us, and all the participants of this day-long symposium and honorable friends of Sahitya Akademi. I am glad to welcome all of you for this symposium on Indianness of Indian literature. Friends, there is a very famous saying attributed to Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, former President of Sahitya Akademi and the former President of India, that Indian literature is one, though written in many languages. It is also the slogan of Sahitya Akademi. There have been debates surround such a line of thought, some agreeing and some others opposing it. Both the sides have presented what they consider as substantiations for their points of view. So, what makes a piece of literary creation an Indian literary creation? That's a question. That's the basic premise. Are all literary creations in the country called Indian constitute Indian literature, or there is something more to it? Are there commonalities that link all the literary creations in different Indian languages? Again a question. The central argument of this first line of thought is Indian culture has more than mere commonalities, but each cultural tradition is intricately and inextricably interwoven with each other. What we call as Indian literature is not merely literature of the nation called India or Bharat, but expression of these cultural traditions. The central argument of the opposing line of thought is there is nothing called Indian literature, but only literature of a particular linguistic community, such as Hindi literature, Tamil literature, Assamese literature, Gujarati literature, Telugu literature, Bengali literature, and so on. These arguments have been going on for the past 7 decades or so, and someone may come along and that argue that what we call as India is not a country but a collection of many states, and Indian literature is nothing but collection of all these. Whether one agrees with one of these positions or anything that may come along in future, such arguments also should be allowed to be heard, since Indian cultural traditions are inherently democratic in nature. Entire Indian thought, if one cares to look into, over the past 2 millennia or so, has within it long chains of arguments and counter-arguments more refined than Hegelian dialectical materialism. Thomas Kuhn had shown us how paradigm shifts always happen outside the field of discourse, and one would do well to look around whether any such debates and engagements have taken place in
Indian thought tradition. When one looks closely, one would encounter the inquiry in the field of philosophy, and in 60s and 70s, we had a group of philosophers trying to figure out what is Indian philosophy. Is there a philosophy underlying various cultures, linguistic and literary traditions and religions of the country? Karl Potter, Daya Krishna, R. Balasubramanian, S.S. Parlinge, Shivajivan Bhattacharya and T.M. Ganapati, to name a few, went deep into the question of Indianness of Indian philosophy. Each went in different directions in their pursuit for truth about Indianness and arrived at different conclusions, barring Ganapati, who empathetically concluded that it is letting the fly out of the fly bottle is a common denominator of all philosophies underlying Indian culture. Not some abstract ideas of heaven and hell are solved by different names of Atma, Jiva, etc., or a god with 1,000 manifestations, but the aspirations of every individual, irrespective of religious conviction, is to end the miserable cycle of birth and death. Even the cultures which did not believe in the native Vedic religions of the country fall under this umbrella. Yet, one shot, Ganapati brought everything that can be termed as Indian culture, though varied under this aspiration. The seminal paper of Professor Ganapati was eventually published in the Indian Philosophical Quarterly in the mid-80s, and that in itself led to similar inquiries elsewhere in the world. The entire debate surrounding the concept made philosophical inquiries of 20th century a vibrant one. Similar inquiries have been happening in the literary circles of India for some time now, and they are happening in different pockets. This symposium is a continuation of Sahitya Akademi's commitment to organize national level programs, inviting scholars from different languages on this topic and allied subjects. And 4 years ago, we had organized a seminar on critical traditions of India in Surat. And our Professor Kapil Kapoorji also was a part of that. And if I remember correctly, some aspect of Indianness also were discussed in that seminar. As we look into the subject in this symposium and the future programs, in my opinion, it would be worth looking into what or who is an Indian according to the masses. For literature, all literature reflect social, physical and psychological realities. It is part of human existence that every person reflects, ponders over and philosophizes on life and aspects of life from time to time. Whatever one's occupation is or whatever one's position in society is, everyone has a philosophy of life or some component or aspect of life in one's own. Given that one can safely conclude that every literary piece is just an expression of author's philosophy on the given subject, whether it is a novel or a poem or a short story or a play or a criticism. In the early periods of time, ordinary Indian did not have the awareness of India as a country or oneself as India, even though different scriptures and literature in different languages carried a concept of India. The identity and the idea which every Indian carried during the medieval ages and during the advent of modern times was an identity and idea of one belonging to a particular kingdom or community, as India was under the thumb of alien rulers for many centuries, and these alien rulers did nothing but to perpetrate such ideas to their advantage. So when the country got independence in 1947 and all the presidencies, provinces and small kingdoms were brought together as one nation, every person was proud to assume the recovered identity of Indian due to extended independence movement. That pride was also accompanied with hesitancy and certainties of different kinds. It is nothing but inevitable that people in independent India
started pondering, reflecting and philosophizing about this identity, even as the psychological effects of alienation and suffering due to bloody partition filled their lives. For the masses, it was not a complex problem, and one can easily define that whoever is born within the geographical boundary of India is an Indian. Though much truth in such attempts by majority and the rulers in early days to provide passports and documents were pretty much in the same category of thought, it is too simplistic and naive to settle there once for all. For India is a host to multitude of cultures, language families, literary traditions, etc. And there may be people who may not fall within the definition able by geography, and further complex questions are bound to arise from therein. Further, scriptures in different Indian languages were pointing out to a much larger umbrella of near cosmopolitanism with dictums like Vasudhaiva Kutumbakam. All this go on to show that while Indianness of Indian literature can be easily ascertained taking into account commonalities, it is also worth looking into various perspectives. Hence, this symposium, I sincerely hope everyone attending and participating in this symposium stands benefited. With these few words, I am glad to welcome all of you once again. Thank you all. Many thanks, sir, for your brief and significant address. I now invite Professor Kapil Kapoorji to inaugurate the symposium with his address. Professor Kapil Kapoorji is a distinguished scholar of linguistics and literature and an authority on Indian intellectual traditions. He served as professor at the Center for Linguistics and English and at the Center for Sanskrit Studies at Jawaharlal Nehru University, of which he was Pro-Vice Chancellor. He is Chief Editor of Sahitya Akademi's Encyclopedia of Indian Poetics and Editor-in-Chief of Encyclopedia of Hinduism, which is coming out in 11 volumes. He is member of Honorable Prime Minister's National 75th Year Commemoration Committee, Executive Council, Nehru Memorial Museum and Library, High Level Committee IKS, Ministry of Education, and is former Chairman, Indian Institute of Advanced Study, Shimla, ICHR National Archives Editorial Committee, India Policy Foundation and MHRD Language Expert Committee, and former Chancellor, Mahatma Gandhi International Hindi University, Varda. Professor Kapil Kapoorji. Thank you, sir. Sabko namaskar. Padma Bhushan Kapil Kapoorji. Sabko namaskar. My great respect for my senior colleagues, friends, and other teachers, and I also see some young students, which is very nice. Good to talk to the young people. As I often say, people of our age, we are pots of clay. We can be broken but not changed. And the young people are pots of gold. You cannot break them, but you can change them. And I hope to listen to you. कई विचार दिमाग में आ रहे हैं। पहला तो मेरा प्रश्न यही होता है कि हिंदुस्तान में कौन सी भाषा में बोलते हैं, क्योंकि नाम जब हिंदी दिवस भी मनाया जाता है तो कई भाषा अंग्रेजी में होता है, या संस्कृत दिवस मनाया जाता है। तो ये जो हमारी एम्बिवलेंस है, रीजनल there is a fundamental change in the medium of instruction. This will continue. तो मैं एक प्रकार की प्राकृत अंग्रेजी हिंदी मिक्स में विश्वास रखता हूँ, क्योंकि जिसमें बात कह सके उसमें कह दें। मेरे दिमाग में एक बात आती है कि बेसिकली एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है हर सिविलाइजेशन में रहा है, हु एम आई। अगर उसको आप कलेक्टिव लेवल पे देखें तो इस कंट्री में, इस देश में भी एक प्रकार का एक पॉइंट पे जाके एक
स्केप्टिसिज्म, एक शक पैदा किया गया कि हम हैं क्या, हम कौन हैं। अगर आप हमारी ओलंपिक टीम्स की विजुअल्स देखें, कभी पगड़ी पहन लेते हैं, कभी टोपी पहन लेते हैं, कभी नीला रंग, कभी सफ़ेद रंग, है ना। मतलब अपनी जो हम हैं क्या, वो आई, ये बेसिक इसमें इसी से स्टेम करता है ये भी प्रश्न के भी, चाहे हम अपने बारे में सोचें या हमारा जो साहित्य है या हमारा दर्शन है कि भारतीय इंडियन है कि नहीं, लिटरेचर इंडियन है कि रीजनल है, हर एक भाषा का अलग है, या कि वी कैन से कि सब में एक प्रकार की एक देयर इज ए रिवर दैट रन्स थ्रू ऑल और ए थ्रेड दैट रन्स थ्रू ऑल, यू नो, दैट कैन वन कैन सी। एक बात तो है कि 19th सेंचुरी ऑनवर्ड्स हमारे देश में दो प्रकार का साहित्य है, बड़ा क्लियर है, दो धाराएं हैं। एक मेट्रोपॉलिटन लिटरेचर है जो कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्ट, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश, पर्टिकुलरली इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश एजुकेशन, लोगों ने लिखना शुरू किया, अपनी भाषाओं में भी लिखा, पर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्न थॉट एंड वेस्टर्न प्रॉब्लम्स, and we became great, you know, import-export country, exporting our virtues and importing the vices, exporting whatever is good about us and importing the problems that West has, existentialism, alienation, you know, और French Revolution का all men are born equal, or inequality, injustice, liberalism, nationalism, individualism. These are some of the issues which this metropolitan literature took up. Because जो metropolitan literature, what I call metropolitan literature, whether written in English or in Indian languages, it was under the influence of West, and even the forms, literary forms, like novel, for example, forms also were adapted from novel to haiku. Haiku तो बड़ा अच्छा है क्योंकि हमारी civilization ही अब बॉन्जाई हो गई है, तो बॉन्जाई के साथ हaiku ही चलता है, एपिक तो लिख नहीं सकते हैं। तो दो लिटरेचर मेट्रोपॉलिटन, but at the same time a large body of literature, no, not this literature in a wrong word, because basically it's oral compositions, it is formative, it is oral and performative. Even the printed epics that we get, we may think Mahabharata is a written text. It's not. It's an oral text because it is metrical and it is meant to be enunced. Enunciation. And it takes innumerable forms in performance all over India, in all languages, from Yakshagana to all that. You see this epic in taking the actual visible, audible forms, individual as well as collective. In one language, sometimes in mixed language like the Malayali experience in using Malayali plus Sanskrit or some other language. तो mixed language. It's called mixed languages. like राजशेखर ने खुद कहा है कि भारत में काफी साहित्य मिक्स्ड भाषाओं में, मिली जुली भाषाओं में लिखा जाता है। पर हमने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट की अपने आप, क्योंकि हमने प्रॉब्लम्स क्रिएट की। वी वेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश एजुकेशन 1835, 188 साल हो गए हैं, 188 years, और वो जो 5 पॉइंट से हुई थी वो अभी तक भी हम अनयूज नहीं कर पाए। हम सब जानते हैं, पढ़े हुए हैं, फिर भी एक पर्सपेक्टिव जरूरी है उसका भी कि हम ये इशू ही, ये जो इंडिया शब्द है, इंडिया एंड इंडियन, ये भी उसी का रिजल्ट है 1835 का एजुकेशन एक्ट। आपको 17वीं 16वीं शताब्दी में इंडिया अपने क्षेत्र में अपने लोगों की बोली में नहीं मिलता। मे भी इंग्लैंड में जब कोई लिखेगा तो वो इंडिया लिखेगा, बट यहाँ नहीं है। तो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट क्रिएटेड दिस स्किज्म इन आवर माइंड, वो जो इंडिया वर्सेस भारत, यू नो दैट स्किज्म। उन्होंने कहा कि
हमें कुछ ऐसे प्रकार के व्यक्ति बनाने हैं, पैदा करने हैं। पहली में दैट्स द ओनली पॉलिसी डॉक्यूमेंट। अभी आपको भी कॉल एमईपी एजुकेशन पॉलिसी, वो थोड़ा सा लेट स्टेज पे, ओरिजिनल सम ऑफ यू आर फेमिलियर, इट वाज ए 482 पेज डॉक्यूमेंट, 482 पेज, एंड इट हैज बीन, पंजाबी में कहते हैं छंगना, इट हैज बीन कट डाउन टू 60 पेजेस। इस सब 422 पेजेस तो शायद था उसमें। तो 60 पेजेस में लेट स्टेज पे उन्होंने दो चीजें इंट्रोड्यूस करी इस एडिट में। एक बड़े डर के, बहुत डर के कि हम 5वीं क्लास तक बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाएंगे। ये डर के गया, ये डरेगा कि अगर आप ध्यान से पढ़ें, wherever possible children will be taught in the mother tongue up to class 5, maybe class 8, wherever possible. So Indian language is not possible everywhere. Indian languages, English is possible everywhere, but wherever possible, Kannada या मराठी या पंजाबी होगा। तो ग्रेट डिफिडेंस, उसका भी बड़ा, उसी का जो रीजन, बड़ा product of that education and leading to questions like this, Indianness of this, Indianness of that, Indianness of philosophy, Indianness of is a massive body of philosophical literature in India, जो व्यावान में है। अगर आप उपनिषदों का ही ले लें और जो subsequent जो कमेंट्री ट्रेडिशन है, टीका परंपरा है, massive body है। Even to ask the question whether we are philosophy, how can you not just say that we are Indian have no historical sense? India does not have this. All these questions arose because of this policy. क्या कहा उन्होंने? हमें ऐसे व्यक्ति पैदा करने हैं जो दिखने में तो हिंदुस्तानी होंगे, but in 4 things: opinions, values, morals and intellect. Opinions, समोसा नहीं खाना, बर्गर खाना है, ज़्यादा हेल्दी है, कैलोरीज गिननी है ना, कोलेस्ट्रॉल तो नहीं हो जाएगा शुद्ध घी से। इन ओपिनियंस, वैल्यूज की भी अगर आप बड़ी अच्छी सी मिलेगी आपको। फॉर एग्जाम्पल संयम की जगह इंडल्ज, इफ यू हैव मनी इन योर पॉकेट। नियम, अरे वे ऑफ डूइंग थिंग्स, नो आई एम ए फ्री पर्सन, आई एम ईटिंग पापा, I can do what I want to do. So values, morals. Your Supreme Court and Chandrachud ji is a great example of confusing Indian values with morals with Western morals. Product of children of living, the moral system which attacks the fundamental unit of the Hindu civilization, the family. Hindu family is an institution in itself. It's subject matter of much research, much derivation the world over in sociology. उसको undermine करना, because if you want to undermine the civilization, but the first thing was you change the education, which Macaulay was a great man. I'm a great admirer of Macaulay, because Macaulay, if you read his speeches in the House of Commons, he has such praise for India and Indians, in the House of Commons. He said that these people have travelled all over, they don't speak untruth. If they don't want to speak the truth, they keep silent. And they have very strong adherence to their own value system and their own knowledge and their own culture. So you can't rule these people. To rule these people, you have to change their culture. Culture बदल ही नहीं, उसका तरीका क्या है? Education. तो values and then intellect. अब intellect ये, so we will produce, बड़ा interesting, डेली आप जानते हैं शब्द क्या है? Interpreters. अब interpreters के हिंदी में 2 अनुवाद हैं, बिचौलिए और दलाल, है ना? ठीक है? Interpreters. और आज भी अंग्रेजी पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है
वही काम करता है between the rulers and the masses. अरे गंवार हैं, backward हैं, है ना? Our culture would have been destroyed, but for, thank God, the illiterate masses. Because they did not change. They didn't give up their values, they didn't give up their systems. While the entire metropolitan, the city, urban class, or English educated, remember Anand Kumaraswamy, he said educated Indians, and then he gives a footnote. This is how the victims of Indian education are described. Educated Indians. तो ये जो schism दिमाग में interpret, अबे 188 साल हो गए हैं. Formula बड़ा simple था. Macaulay, I said I admire because he said you have to change. So he knew what his country wanted, and he did it. So he's a great. We may know what our country wants. In fact, many times we don't even know what is our country. As this question or any other question will tell you. कि ये मुल्क है क्या, देश है क्या, तो उसके बाद ये इस देश को चाहिए क्या, वो तो नेक्स्ट स्टेज है. उतने समझने वाले कितने समझने वाले लोग होंगे. तो उसमें E. This is the English education policy. E. English education employment. आज भी नहीं टूटा ना. आप अभी भी आपको इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के एग्जाम में रिज्यूमे ही है, रूरल लैंग्वेज IAS में आ गया है धीरे धीरे. फिर ऑन दिस बट ग्रेजुअली जॉब्स जो एडवर्टाइज होती हैं उनमें द रिक्वायरमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एम्प्लॉयमेंट के साथ रिलेटेड है. इससे क्या हो गया कि एक this education in some, we should not spend much time on this. It is, we were thinking people, great original minds. We became translators with translated minds. You see, our minds, we operate like translators, translated minds, and have great the markers, the judgment, the matrix against which we judge, comes from the other civilization, for which we have a very great admiration, but which is essentially a genocidal civilization, which very few people, in fact, there was a time when for the first time I said it, there was a very strong reaction from our educated Indians, because Western civilization is a genocidal civilization. Whether you talk about the Red Indians, you talk about the Mexicans, who were 37 million, only 1 million are there, or if you think that is too far back, 17th, 18th century, then 1940 to 45, 6 lakh Jews killed by setting up factories. So it's a genocidal civilization. And they transfer a civilization which transfers its guilt to us, to other people. Wars सबसे ज़्यादा खुद लड़ते हैं. हमें कहते हैं वर्ल्ड पीस. Violation of human rights through drones every day. हमें कहते हैं बड़े बैकवर्ड बकरी काटते हैं कमाख्या, बड़े वायलेंट लोग हैं. हमें कहते हैं कि हार्मनी, पीस, लिविंग बीइंग सब होना चाहिए. All these things. But that civilization is teaching us. Now the question is, इसमें तो basically दो शब्दों की प्रॉब्लम है. And not only in this, in everything, India or nation. That is the problem. जिन्होंने political science पढ़ी है, गार्नर गिलक्रिस्ट की किताबें पढ़ते थे. State, nation, nationality. State, nation, nationality. Very few people, a teacher also did point out that the concept of nation is post-Bismarck concept of Europe. Post-Bismarck. The Austro-Hungarian Empire in 1881 it broke up. उससे पहले कोई यूरोप में भी नेशनल स्टेट्स नहीं थी. हाँ जी. You see, till 1881.
It broke up, and then you have Norway, Belgium, Switzerland, France, Britain, Germany, and the definition, one language, one religion, one race, is the definition of nation. One ethnicity, one religion, and one language. अब हम भी अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो थे वो भी इसी एजुकेशन पॉलिसी की प्रोडक्ट से बड़े सियाने थे, जैसे हम भी बड़े सियाने हैं, है ना? तो उनको ये चिंता हो गई, अरे भाई इंडिया तो नेशन ही नहीं है, क्योंकि नेशन तो एक भाषा, एक धर्म और एक जाति होती है, ठीक है? बड़ी सारी कोशिश कर आके आजकल उन्होंने एक आंसर निकाल लिया वैसे, एक भाषा हिंदी, एक जाति दलित और एक धर्म सेकुलरिज्म, है ना? दिस इज हाउ। और हिंदी भी नहीं, हिंदी तो डी ज्योरे डी फैक्टो इंग्लिश, इंग्लिश दलित सेकुलर, सो इंडिया बिकम द नेशन, हो गया ना, नेशन बन गया, बनता नहीं ऐसे पर थिंक बन गया। उनको भी प्रॉब्लम थी नेशन, दैट्स व्हाई देयर वाज नो नीड टू इंक्लूड एन ऑफिशियल लैंग्वेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि हमारी इकोनॉमी हिंदी, हिंदी पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट लैंग्वेज थी एट दैट टाइम, हिंदी लगा दी। लुक एट द हिस्ट्री ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज, हिंदी लगाई 5-10 साल तो साउथ वालों को समझे, इंडियन थोड़े लेट बैक होते हैं, गोल भी हो जाता तो पता नहीं लगता कि गोल हो गया है, ठीक फुटबॉल पीछे न देख ले। तो 10-1 साल बाद साउथ इंडियंस को समझ आया क्या हो गया भाई, तो 5-7 बसें जलाई, 4 पत्थर मारे, एक आधा लीडर का हाउ किया, तो इन्होंने इंग्लिश को एसोसिएट ऑफिशियल बना दिया, एसोसिएट। बट इवन टुडे you cannot draft a legislation, you cannot draft a law except in English. You cannot draft. आप अपनी भाषा में कानून नहीं बना सकते, बनाया नहीं अंग्रेजी में। चंद्रचूड़ जी ने बड़ी मेहरबानी करी, बड़ी मेहरबानी करी कि हम अपनी जजमेंट को इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करें। आप सोचिए सर, उदयनारायण जी, बजाय कि हम अपनी भाषा में जजमेंट देंगे और अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। अब जैसे इंडियन यूनिवर्सिटी शिमला में when I went, the first thing I did was in Indian University Shimla, research was allowed only in English and Hindi, only. जिसका रिजल्ट क्या था, साउथ के बहुत कम लोग आते थे, नॉर्थ ईस्ट के नहीं आते थे, वो पढ़े अंग्रेजी हिंदी। जिनको अंग्रेजी या हिंदी नहीं आती और इंडिया में आप गिनने लगो, इनफैक्ट आपके जो वाकई भारतीय चिंतक हैं, जो अगर हैं तो वो अपनी भाषाओं में हैं और वो भाषाओं में ही लिखते हैं, वो भाषाओं में ही लिखते हैं, तो वो तो कोई नहीं आता, उन पे काम भी नहीं होता था। सो व्हाट आई डिड, आई सेड we will allow research in all the scheduled 8 languages, 22. It's a law now in there. But many people, you see, as we say, don't understand, don't like. India is a very important factor है political correctness का, है ना? ये बड़ा important parameter है। तो उसके हिसाब से उसको promote नहीं किया है, पर आप आते हैं थोड़े-थोड़े, पर promote करने का people must know। जिन लोगों को आप अब अलाउ कर रहे हो, वो अंग्रेजी के न्यूज़पेपर में तो आपकी एडवर्टाइजमेंट नहीं पड़ेंगे ना, तो यू हैव टू एडवर्टाइज, एंड इट इज नॉट डन, सो इंफ्लक्स नहीं है, थोड़े दिन में हो जाएगा। सो नाउ इंडिया एंड नेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल नेशन, द प्रॉब्लम अराइजेस विद इंग्लिश लैंग्वेज। आप अगर नेशन शब्द को ड्रॉप कर दीजिए, इस डेफिनेशन को ड्रॉप कर दीजिए, the constitution maker, instead of thinking that the definition is bad, they said we are bad. Or the definition which we apply, they said no, we are not a nation. And sir, आपको पता होगा, departments of English, nation building became a major theme of research.
साइंस एंड लिटरेचर में नेशन बिल्डिंग, इंडिया, मतलब इंडिया को नेशन बनाना है तो हम हैं क्या, वी आर ए हर्ड ऑफ वाइल्ड ज़ेब्रास, है ना, अभी तक तो वी आर हर्ड, तो इसको इंटीग्रेट करके एक नेशन बनाना है। भूल गए कि भाई आप अपना कोई ग्रंथ तो पढ़ लो, एक विष्णु पुराण ही पढ़ लो, जो कि सीधा कहता है कि दक्षिण समुद्र से हिमालय तक और सुलेमान से किरात शब्द यूज करते हैं म्यांमार के पहाड़ी पर, ये जो प्रदेश है ये तो भगवान ने देश बनाया ही हुआ है, ये देश है और ये भारत है, क्योंकि इसमें भरत की संतान रहती है। एंड देन इनुमरेट्स, विष्णु पुराण 3rd century BC, 4th century BC, enumerates the races, the mountains, the rivers, the people, the communities, the belief systems of people. Immense variety and multiplicity is there in this country called Bharat. So अगर इंडिया शब्द का को ड्रॉप कर दिया जाए, इंडिया, क्योंकि मुझे याद है जेएनयू में कि हम लोग कोई इंडिया शब्द यूज करते थे, जैसे इंडियन पोएटिक्स, तो व्हाट इज इंडिया, व्हाट इज इंडिया, इंडिया तो कुछ है ही। प्रॉब्लम वही है, ब्रह्मन एक है कि अनेक है ना, एक अनेक बनता है कि अनेक में एक है ना, दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम वही है। तो ये इंडिया क्या होता है, इंडिया क्या है। अब भारत में यू कैन नॉट इमेजिन आस्किंग क्वेश्चन, ये भारत नाम क्यों, ये कहाँ से आया, 3 भरत हुए, 2 भरत हुए, पर क्या है नहीं है वो नहीं रियलाइज होता। तो विष्णु पुराण अगर मैं तो लिख के भी लाया हुआ हूँ, अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊं 4th century BC में, you know, envisioning this unit, देश, and by the way ISIS जो है ना अरेबिया का, वो भी देश ही कहते हैं, देश। इंडिया इज ए गॉड डिफाइंड, गॉड तो हमारे होता नहीं है, जैसे जो भी होता है पावर, आप ब्रह्मन डिफाइंड तो नहीं कर सकते ना, बट वट एवर इज ए डिफाइंड एंटिटी, ज्योग्राफिकली डिफाइंड है। और देश जब उसको सोशल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वो चक्रवर्ती क्षेत्र बनता है, चक्रवर्ती क्षेत्र। और जब वो चक्रवर्ती क्षेत्र की जो संस्कृति है, जिसमें वैल्यूज आते हैं, बिलीफ्स आते हैं, आइडल्स आते हैं, कस्टम्स आते हैं, फेस्टिवल्स आते हैं, जब वो संस्कृति चक्रवर्ती क्षेत्र में एक कॉमन संस्कृति इवॉल्व करती है तो वो राष्ट्र बन जाता है, राष्ट्र। सो यू नो, फ्रॉम देश टू चक्रवर्ती क्षेत्र टू राष्ट्र। अथर्ववेद में, as long back as अथर्ववेद, the poet says, O Mother Earth, destroy those who want to subdue my Rashtra by Shastra or Shastra. So the idea that this Bharat is a Rashtra goes as far back as Atharvaved. अब आप क्योंकि वेस्टर्न लोगों ने रूल किया, काले आदमी है, इनका इतना ज्ञान इतना पुराना कैसे हो सकता है ना, तो आपकी डेट खींच के 1200 BC 1500 BC कर देते हैं, और बाद में सनौली में रस निकल आता है 1900 BC का, जब मैरानगढ़ पे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस निकल आता है 7000 BC का, then you push back the civilization by 10,000 years। तो उस वक्त ये नोशन राष्ट्र का था। इसकी एक बड़ी जबरदस्त एग्जाम्पल है, जब तालिबान वर फाइटिंग द रशियंस, दैट इज इन 90s में, तो there was a picture of a 12-year-old Afghan boy carrying a Kalashnikov rifle। उनमें अभी AK-47 नहीं आई थी, Kalashnikov rifle, and
यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर स्लंग है, ट्रांजिस्टर। उस जमाने में ट्रांजिस्टर इतने होते थे, उनके ऊपर लोग ना लेदर का कवर डालते थे, और if you remember, my father was very fond of that kind of ट्रांजिस्टर। And the caption said कि ट्रांजिस्टर में लता मंगेशकर के गाने लगे हुए हैं। देखिए, काबुल के बियॉन्ड, विदर्भ, उज्जैन के आसपास के इलाके की संस्कृति का स्रोत, यहाँ स्रोत है। बॉम्बे माने बॉम्बे वही गाना उधर का एक वही गाना आपको वहाँ भी सुनता है। मिडिल लास्ट ईयर 2 years बैक उज़्बेकिस्तान प्रेसिडेंट in an official function sang a Hindi film song. So your culture which has a root somewhere, or it just spreads, and when it spreads, there Rajesh Khanna shirt आपको याद होगा, इधर साइड पे बटन, तो सारे इंडिया में पर कुर्ते भी राजेश खन्ना के बन गए, शर्ट भी बन गई। तो ये सारा प्रोसेस डिस्पर्शन का, cultural dispersion is described in a 7th century book of poetics, राजशेखर काव्य मीमांसा। कभी देख लीजिएगा। राजशेखर was in कन्नौज में था, और कन्नौज के थोड़ा आगे, मतलब कन्नौज आप आजकल तो एक्सप्रेस वे है ना, कन्नौज का कट लेते हैं आप, कन्नौज का कट लेने से थोड़ा आगे नैमिषारण्य भी आता है, नैमिषारण्य। और कन्नौज का इलाका जो था, इट वाज एन इंपीरियल कैपिटल। आजकल वहाँ अतर फ्लेवर बनते हैं, बस इधर बनते हैं बस। इट वाज एन इंपीरियल कैपिटल ऑफ द मोखारीज, ग्रेट यशोवर्मन ऑफ कन्नौज। उसके यशोवर्मन के कोर्ट में राजशेखर वाइफ was from she was a South Indian, उज्जैन से, अवंती सुंदरी, and in his books he praises and accepts his wife's opinion. That must be one of the rare examples in text where a husband acknowledges that the wife is right. Avanti Sundari की opinion. She was a poetess also. Now, Rajshekhar's Kavya Mimamsa really describes that literary compositions, Kavya Purusha one side, or Kavya Vidya. So, Kavya Purush is the son of Saraswati. So, literature is a product of language and learning. And of course, politicians then add abhyas, practice, and they also add pratibha, kind of given instinctive ability. Not everybody can. So that Rajshekar says, Kavya Purusha, son of Saraswati, and he followed his mother around. And when the mother was to go to the other loka, he said, I'll also come. She said, no, you can't come. You belong here. So you stay here. To keep him there, the mother married him to Kavya Vidya, literary theory, literary very sociologically भी बड़ा बिल्कुल ठीक। ऐसे ही लोग पेरेंट्स ऐसे ही करते हैं ना, जो लड़का अगर बड़ा कविता लिखने लग जाए पंजाब में, तो उसकी वो शादी करा देते हैं। ये अब दूसरी तरफ जाने लग गया, उसकी शादी कराओ, तो उसको काव्य पुरुष की शादी करानी काव्य विद्या से। दोनों दे स्टार्टेड ट्रैवलिंग। आजकल तो हनीमून होता है ना, एक जगह जाते हैं। साउथ ईस्ट एशिया इज वेरी पॉपुलर, सस्ता है, बट वो घूमते हैं, they go, and it is described in the text. He said that wherever they go, they wear the local dress and they use the local language. You see, आप समझ रहे implications? What powerful implication! It is true even today. You see, that wherever they go, उनकी वृत्ति प्रवृत्ति वो वहाँ की लोकल हो जाती है, और वहाँ की वो ड्रेस हो जाती है, वहाँ के मैच
और उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं उस कंपोजिशन के एट्रीब्यूट्स हैं लिटरेरी कंपोजिशन के, वो भी लिस्ट करते हैं हम। एंड इट इज कंपोज्ड, इसी पूरे देश में घूमते हैं, पूरे देश में। सो यू नो the whole world of Indian literature is visualized as a person, Kavya Purusha. Purusha. And I'll just read out to you the small one thing here. Words and meanings. First of all, that Rajashekhar, नैमिषारण्य मैंने कहा, नैमिषारण्य में शौनक ऋषि का आश्रम था, शौनक ऋषि का, और एक क्षण में, एक निमिष में वो जो उन पे अटैक हुआ था खत्म किया। और ये जो वो शौनक ऋषि आजकल इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर है, ऋषि शौनक, क्योंकि वो गुजरावाला के थे पंजाबी, शौनक को बोला नहीं जाता था, शौनक, ऋषि शौनक, है ना राणा जी, ये शौनक, तो आजकल ऋषि शौनक जो है वो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर। और नैमिषारण्य में उनका इट वॉज ए ह्यूज गुरु, 10,000 स्टूडेंट्स अबाउट दैट। और गुरुकुल का अर्थ ये होता था कि सो कॉल्ड जो गुरु है वो ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, फीडिंग, मेंटेनिंग, एंड ही नेवर टुक मनी फ्रॉम द किंग। इट वॉज नॉट फंडेड बाय द रूलर, इट वॉज सपोर्टेड बाय द पीपल। हालांकि गांव के आसपास वाले लोग अनाज और जो भी चाहिए, और गुरु की महिमा बहुत होती थी। राजा भी आता था तो अपना मुकुट उतार के, जूते उतार के नीचे बैठता था, नीचे बैठता। तो देयर वाज अ डिफरेंट अनदर टाइम। आई रिमेंबर शेक्सपियर, बट दैट वाज अनदर टाइम बिसाइड्स द वेंच वाज यंग। शेक्सपियर ना, तो वो अलग जमाना ही अलग था। बट स्टिल यू सी काव्य पुरुष who represents all literary composition of Bharatvarsh. India was not known then. जब राजशेखर ने किताब लिखी तो इंडिया का पता नहीं था कि इंडिया भी कुछ है, भारतवर्ष। एंड लैंग्वेज लर्निंग, अभ्यास और काव्य विद्या प्रति whole compositional literature is visualized as a purusha, and an image that identifies the properties of Bharatiya Kavya. Properties. वो देखते हैं, I translate this. Words and meanings together constitute its substance. Shabdarth Sahito Kavyam. Words and meanings together constitute a substance. Sanskrit language is the mouth, Prakrits are its arms, Abhramsha bhashaएं its thighs, Paishachi northwest Dardic languages are the feet, and mixed languages of the rest of the Bharatvarsh are its chest. You see, in 7th, 8th century, the beginning of it, the died beginning of it, you have here a poetician visualizing the entire body of literature in all the Indian languages as one literature. One literature. Okay? And Sama, appropriate, Sama, Prasanna, Madhura, Ojasva, Udar are its attributes. Udar में तो literalism भी आई जाएगी, meter are your pores, because it's an oral culture, and our compositions are compositions. They are not literature, they are compositions. Because the word compose, we can't talk of a writer, we talk of a composer.
because it is basically close to a musician and music, because the text, most texts are Shravya Preksha, oral visual text, and they are all performative. And with every performance, the text extends, modifies, changes. That is how the Mahabharata got constituted, over several renderings and extensions and so on and so on and so on, right? Now then, the question followed by an answer and problems are your modes. So there is every composition interrogates something, and every composition addresses some problem. Simple word, but these are oral texts. Even Rashekar Kavyamamasa is an oral text. The oral texts are very small, short, because they are meant to be held in the mind here. Like Ram Bhadracharya ji, सब कुछ यहाँ रखा हुआ, उनको exact quotation है, मतलब उन्होंने measure कर लिया सरयू नदी से, उन्होंने जो बताया वो measurement करी तो prompt वहाँ पे जहाँ राम मंदिर है वहीं पे निकला. Everything here. I have personally met a very great grammarian way back in 70s, early 70s, but that time was 84, Peri Surya Narayana Shastri. Peri Surya Shastri. आप भी होंगे शायद. You were there? Near Tirupati. We hear everything, and he just sat for hours without moving. हमारे जैसे आधे घंटे में फिर इधर होते हैं, फिर सारे इधर होते हैं, तो थक जाते हैं ना वो तो बैठे रहते हैं, ना पानी मांगना ना चाय मांगनी. So the whole culture, oral culture, is not because we did not know writing. Because Ashtadhyayi mentions the word lipi 7 times. And Ashoka's inscriptions, 4th century BC, come in 5 scripts. 5 scripts. Rhode Island का जो वो stone है, वो 5th century BC है. So the oral culture is not because we didn't have writing. Oral culture is an alternative culture, where knowledge is created, stored, disseminated and transferred by word of mouth and in the mind. It is stored also in the mind. It's not stored in the perishable materials like the CD, EC and hard disk of a computer. They are perishable. They are perishable materials. So it's stored there, and that is why we have 7,000-year-old texts intact. They have come to us intact. While Shakespearean scholarship, whose plays were published when Caxton Press had been established, the major scholarship in 20th century was the textual scholarship. ये मार्लो की लाइन तो नहीं है, ये मार्लो ने एडिशन किया. But you got your text intact, not a worm displaced over 7,000 years by pararemy and parabody is a complex subject, but mechanisms they developed for this, and the mechanisms which assumed the knowledge of phonetics, morphology, grammar, and so on. So this, now you see, anupras, alliteration, and repetition, and upma, simile. For Aristotle, the greatest figure of speech for literature is a metaphor. And Dr. Johnson, I'm glad I found Dr. Samuel Johnson, who disagreed with Aristotle. He said, no, simile is the fundamental, because like your computer also functions as a similarity search device. And it is similarity which is the source of much knowledge, creation knowledge. हमारे यहाँ उपमा is important. Upama is Rudra till 9th century says that उपमा से ही सारी figures of speech generate होती है from simile, and he has 129 figures of speech in Rudra Ruyak's text. 129 figures of speech. So ये सारा. Now you see the question that India का question भी तो I have addressed it that you should drop the idea and you look at Bharat. I'll give you
just a small, like a tea taster, you know, just the taste. I am reading from Vishnu Puran. Jambu Dvipa, something like Asia, something like. Although there is a book, Inaugural. It was composed by Dr. Madhusudan Oja in Sanskrit. It has been translated by me many years back. It was published in I think 2000 something, right? And it has been reissued now. Bharat the India narrative, right? I stop. I can, you know, that my daughter says, Papa, you talk too much. I think I should not cut it off. The country that lies north of the ocean and south of the snowy mountains is called Bharat. As descendants of Bharat dwell there. Now, if you compare Inaugural, I am saying, Inaugural derived its dimensions of India from Vishnu Puran. You take those dimensions and take Ptolemy's Roman map of India and you see how they match perfectly. Ptolemy's Roman map of India. तो ये ऐसा नहीं कि किसी ने उसको ऐसे लिख दिया और कुछ है नहीं. World, you see, is known. And it's very interesting sometimes to compare because Aristotle's Politics talks of the state and it has several sections. The last part of the state are slaves. Slaves are an accepted part of Greek democracy, Athenian democracy. And from that to 1865, when Abraham Lincoln, who was born in the wrong country, he should have been born in India, Abraham Lincoln abolished slavery in 1865. From that time, Greeks to Abraham Lincoln, the Western civilization has been founded, engendered by and founded on slavery. While Diodorus Siculus, quoted by Herodotus, quoted by R.C. Muzumdar, says Diodorus Siculus, who came to India, came to Bharat, not India, he said, these people have some wonderful laws. One of the laws is that no man can be a slave to another. This is 2nd century BC, sir. No man can be a slave to another. So before we start submitting ourselves to the superiority of a culture or a civilization, I think it's important to compare. And also the anyways, so the country like this, land of this and obtain emancipation. Very important point that it makes is that of all the lands that are there in this world, this is the only land of yoga. Yoga, by which he means tyaga, sacrifice, doing things for others. This is the meaning. Lok sangra, जो बाद में भगवद गीता में 3 बार शब्द आता है. Yoga. While all the other lands are lands of bhoga. Splendid. Bharat is the only land of yoga, all the others are land of bhoga. पिछले 70 साल से हमारी सरकार ने पूरा जोर लगा दिया कि इसको भी लैंड ऑफ भोग बनाया है. Official, material, भौतिक, comfort, success have been put up as the ideals for the young people. See, success was never, because the world is full of successful people. What we really need are happy people. And the goal of happiness, which Aristotle in his Nicomachean Ethics also upheld, has been the goal of life in Indian philosophy, worldview. Not success, happiness. Not pleasure, happiness. And it comes from whatever so on. So ये
योग की भूमि है, भोग की नहीं। एक गलती से तो नहीं, कॉन्शियसली मैंने एक हिंदी में किताब लिखी थी, हिंदी वर्ड ने पूरा इसको इग्नोर किया क्योंकि ये पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है ना। क्योंकि ये किताब है रति भक्ति भारत की कथा परंपरा में। अगर आपको इंडियननेस इन इंडियन लिटरेचर देखना है तो आप भक्ति मूवमेंट को स्टडी करिए। 6th सेंचुरी में तो कोडिफाई हो जाती है आंदाल, तमिलनाडु की आंदाल, है ना, उसे प्रोटो मीरा, an abandoned girl found by the gardener of that Tanjavur temple, and as she grew up she started picking up flowers and then started making garlands as her father did, then started going to the temple, started offering the garlands, and there she heard stotras being sung. She started composing stotras, and they were so good that the Pandits asked her to sing her stotra when she was only 9 years old. And Tiruvalmalai, her stotras till today are sung in all the Tamil Nadu temples. She composed them in Tamil, 6th century. And when the father read that she should be married, she said, I am already married to Ranganath. I am married to Ranganath. I will marry Udira. The Pandits were so fond of her, they actually arranged a marriage. वो फेरा ले रही थी, and the legend. Now, legendary mode is a characteristic Indian mode of narration. Legendary. उसका मतलब सिंपल यही होता है कि we don't know. जैसे शिव ने, लॉर्ड शिवा, कोई भी आप टेक्स्ट पढ़िए कि उसका पहला रेंडिशन शिवा का, तो क्या मतलब है? We don't know when it started, how it started. So they say that in the last chakra, she was absorbed in the sari ka chor bach gaya tha. And it is said that when she used to see herself in the mirror, she would see only Ranganatha, Krishna. And in this book, Rati Bhakti, the first photograph from Andala to Sohni Mahibar. And the toggling of Rati and Bhakti, love and devotion. आप अगर भक्ति पोइट्री मूवमेंट is perhaps the world's longest literary movement. Longest, 3rd, 4th century में शुरू हो गई. Till today, if you go to Bhagavad across Jamuna, you have Kabir Panthis who still compose verses in the Kabir mode and in their local language, mixed language. Not in any standard language and so on and so on. So the continuity of Andal, Vaswanda, Gyaneshwar, Rasimeta, Miras, a series of Miras, and then Shah Hussain, then Guru Nanak, and then Sarala Das in Odisha, then Geet Govind Wale, Jaidev, and then Shankar Dev and Madhav Kandali, एक पूरा गार्लैंड है भक्ति मूवमेंट में. और वो भक्ति पोएट्री क्या है? भक्ति पोएट्री is the content, the substance is the values, the culture that the Vedic civilization engendered. There was a break in this continuity of culture, the Mahabharata times, Mahabharata war. After Mahabharata war, people became skeptical, they lost faith in all this, and we have a strong streak of materialist skepticism, like Ajit Deshpande and many others, who contested the Vedic, but then at the same time arose the Bhagavata Dharma in order to reduce the rigor of karma theory, because karma theory is very rigorous. कर्म की गति ना डरे, कर्म के कर्म फल तो भुगतना पड़ता है, उसको तोड़ने के लिए भागवत तक भक्ति. And then how from
from the Upanishadic Saraswati Kurukshetra area to the Puranic age in the Ganga Valley, and from there to south, and the Bhakti Dravid उपजी, Bhakti originated in Tamil Nadu, Dravid, वहाँ उपजी, and then Ramanand came back, पूरा सर्कल है, वो सारा लिटरेचर इंडिया, सारी भाषाओं में है, अलग अलग भाषाओं में, बात वही है, जैसे शुरू में कहा एक अनेक हो गया, ब्राह्मण के बारे में जो एक क्वेश्चन है कि एक अनेक कैसे हो जाता है ना, एक ब्राह्मण है पर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, कैसे हो गया, तो वो काल शक्ति है, काल शक्ति से है, तो ये काल और क्षेत्र, देश और काल की शक्ति है कि हमारा ज्ञान, हमारी सिविलाइज सभ्यता ज्ञान केंद्रित पहले दिन से, हमारी संस्कृति मूल्य पर, हमारा समाज कर्तव्य पर, ड्यूटी, कॉन्स्टिट्यूशन ने उल्टा कर दिया, फंडामेंटल राइट्स लिख दिए, ड्यूटीज नहीं लिखी, राइट्स लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, ड्यूटीज लीड टू हार्मनी, तो कर्तव्य पर समाज आना, और जो हमारी एकात्मता है, what makes this geographical land one is not language, not religion, not politics, not states, but a consciousness, चेतना, ज्ञान जनित चेतना का एकत्व, ज्ञान जनित, आप किसी भी, I have traveled a lot. I used to, when I was young, about 100 years ago, I used to travel a lot and to go small places, sit in tea shops. Wherever you go, you always feel you are in the same country. ना आपको जो भाषा नहीं आती, कुछ नहीं आता, but people communicate with you. They communicate with you. I remember KPS Gill. He came to JNU when some बुद्धिजीवीज like us, बुद्धि बेच के जीविका कमाने वाले, we were discussing whether India is a nation or not. And KPS बैठे, क्योंकि आप तो बड़े intellectual लोग हो, आप discuss करते रहो, but let me tell you something. I have been posted in 21 places in this country, and wherever I was, I always felt I am in the same country. To give one wonderful evidence, you see, from Rig Veda to Guru Granth Sahib, the value system is the same. ऋग वेद 10 मंडल हैं, छंदों में लिखा हुआ है, उस समय के जो सियाने लोग थे, ऋषि, उनकी वाणी इकट्ठी की हुई है, संग्रह ग्रंथ है। और 16वीं शताब्दी में गुरु अर्जुन देव, प्रकांड विद्वान, एक गांव में बैठे हुए 15 भक्त फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, 10 भारत और 6 गुरु, मतलब वहां बैठे बैठे उनको पता था कि देश में कहाँ कहाँ ज्ञानी बैठा है। आजकल तो यूजीसी कंप्यूटर और लाइब्रेरी करने का भी लोगों को पता नहीं चलता, प्रमोशन के टाइम पे 10 दोस्तों से आर्टिकल लिखा के किताब एडिट करते हैं। उन्होंने उस वक्त बैठ के पूरे उसी तरह 10 गुरु रागों में, और उस समय के जो सियाने लोग थे उनकी वाणी संग्रह ग्रंथ। ऋग्वेद टू गुरु ग्रंथ साहिब, देयर इज ए कंटिन्यूटी ऑफ थॉट एंड आइडियाज। और नामदेव जो ज्ञानेश्वर के डिसाइपल थे, पर 2 साल बड़े थे, when ज्ञानेश्वर took जीवंत समाधि, he took समाधि while alive at the age of 21. 15 साल की आयु में उन्होंने भगवद गीता पे मराठी में लेक्चर दिए थे, ज्ञानेश्वरी। And when the Namdev was so disturbed, he left Maharashtra. Where did he go? He went to Punjab, Kumman गांव में. He lived there, he died there. And Namdev's Bani is found where? Not in Maharashtra, in Guru Granth Sahib. And we still ask ourselves, are we one country? 13वीं शताब्दी में एक आदमी वहां से उठ के वहां जाता है, उसकी बानी वहां की वहां मिलती है. And we still ask ourselves, when I submitted in 2004 intangible heritage में अभिनव गुप्त, तो तैयार हो गया सारा, तो जब जमा कराना तो सरकार बदल गई, तो उन्होंने कहा नहीं, अभिनव गुप्त तो हमारा हेरिटेज है ही नहीं, है ना? ठीक है ना सर, अभिनव गुप्त थोड़ा हेरिटेज है, तो वो रह गया. तो देखिए काल चक्र. 2 साल पहले IGNCA अप्रोच हुई कि आपने एक अभिनव गुप्त में बनाया था इंटेंजिबल हेरिटेज, डू यू हैव इट? आई सेड यस. तो वो सबको सबमिट है.
कि आप हमें दे दीजिए, हम सबमिट, इट वाज सबमिटेड and it has been accepted as intangible heritage by UNESCO last year. It has been accepted. So you see, the book Kal Chakra जो है, in the book on Indian knowledge systems, 2 volumes में था, उसका आप कवर पेज देखें, उसमें जो भोजराज की विद्या देवी है, उसकी दोनों बाजू टूटी हुई हैं, वो भोजशाला में थी, और वो आजकल नेशनल म्यूजियम ब्रिटेन में है, उसके इमेज है, और उसके साथ में हमने दिया है कोणार्क का काल चक्र, जो व्हील है, 8 घड़ियां वाला, तो काल चक्र होता है और चीजें फिर आ जाती हैं वापस। तो यू सी द कंटिन्यूटी ऑफ आवर सिविलाइजेशन, कंटिन्यूटी ऑफ आवर हिस्ट्री ऑफ आइडियाज, हिस्ट्री ऑफ कंपोजिशन, वेदों से लेके आफ्टर ऑल आपको भक्ति कोई भी ले लीजिए, what is he talking about? He is talking about things which are central to your Upanishads, central to your Upanishads, and I am talking of that body of literature because large body of this literature is oral. जब नॉर्थ ईस्ट में when रिलीजन परिवर्तन हुआ, तो चाहे जो जातियां थी, खासो, गारे, गारो, जैतिया एंड खासी, उनमें काफी लोग कन्वर्ट हो गए, काफी लोग रह भी गए, तो देन राइटिंग डाउन ऑफ ओरल लिटरेचर स्टार्टेड, राइटिंग डाउन, रोमन स्क्रिप्ट में लिखना शुरू हुआ, लिख दिया, एंड द पर्पस ऑफ दैट इज टू प्रिजर्व द लिटरेचर, बट देन व्हेन यू राइट डाउन द ओरल कंपोजिशन, you don't really preserve that composition, you merely fix it. In its natural life, it will be very dynamic, its performance, it will be extended. So therefore, I did suggest that something has to be done to preserve, maintain our oral heritage in a way that its orality remains untouched, and it is not, although we are now in a transition ourselves from oral to scriptural culture, but then thank the West for one thing, for the television. They created it for us, oral visual. आजकल इतने सीरियल हैं हमारे पुराणों के, महाभारत के, रामायण के, जो लोग पढ़ नहीं सकते थे, सबको पता लग गया. So the West has created an instrument for the survival of our civilization and culture. So anyway, thank you very much. A number of ideas here and there, but I think I could sort of put it in a composite, when I write down in English, I will write in that manner, perfectly ordered, and what is it and what is not. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके उद्बोधक और विद्वत्तापूर्ण वक्तव्य के लिए। आपने भारतीय संस्कृति की जड़ें और उसकी अद्भुत परिधि को अधोरेखित किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपके वक्तव्य की समाप्ति के साथ उद्घाटन सत्र की भी समाप्ति हुई है। यहाँ हम केवल 10 मिनट का मध्यंतर लेते हैं चाय के लिए, और फिर यही 1 मिनट मैं ले सकता हूँ सर? प्लीज, फिर यहाँ साथ आएंगे पहले सत्र के। Can I take liberty? I want to read the last conclusion of this book. It's in Hindi, and a lot of you will not agree, but doesn't matter. Still, no harm in listening, right? ये भगवान तथा भक्ति की भाषा, भगवान तथा भक्ति की भाषा आज के समय में विडंबनात्मक है। ये भोग का युग है, भक्ति का नहीं। भोग का युग है, भक्ति का नहीं। परंतु ये देश भक्ति परायण देश है और रहेगा। आज का अंग्रेजी पढ़ा लिखा व तथा कथित बुद्धिजीवी समाज इस भाषा से अनभिज्ञ है, इस भाषा से अनभिज्ञ है। परंतु इस देश के जनमानस के लिए ये भाषा तथा ये शब्दावली आज भी सार्थक है। समकालीन शहरी, महानगरीय
पश्चिमी प्रभाव में निर्मित भोग साहित्य के पढ़ने वाले गिने चुने हैं, परंतु लाखों लोग नित्य प्रतिदिन अनेक कथा प्रवचनों को सुनते हैं और अपने को धन्य मानते हैं। कथा प्रवचन सुनते हैं। पिछले कुछ वर्षों से इस देश को चरित्र के नाम पर बदलने के अनेक प्रयास हुए, सोशल इंजीनियरिंग, अनेक प्रयास हुए हैं और उन प्रयासों का पूर्ण समर्थन दिशाहीन सरकारों ने किया है, परंतु इस सनातन देश का चरित्र धर्म के लिए की गई कुर्बानियों से भरे हुए 1000 साल के हिंसात्मक इतिहास के होते हुए भी नहीं बदला, चरित्र नहीं बदला, थैंक्स टू दी इलिटरेट मासेस। आशा है कि इस देश पर भगवत कृपा बनी रहेगी।